Hey students, welcome to Topper Study, your one-stop solution for all your JEE preparations. So guys, कैसे हैं सब लोग यहाँ पे? How is everyone doing? Good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. I hope everyone can hear me. Good afternoon. Good afternoon, students. Okay, so guys, today we are going to discuss about the first class of this particular course. So guys, आज हम discuss करेंगे domain and range of the functions के बारे में. Okay, so before that, I'll give you a very small introduction about myself. So maybe आप लोग already मुझे जानते होंगे यहाँ पे, but again, let me give you a very small introduction. So guys, this is Goutham. I have done my graduation from NIT Surat. I've been teaching from past 4 years. I've taught more than 10,000 students offline and online, guys. Okay, so hello everyone. Hi Pushpam. Hello Arya. Hello Mahnur. Hello Ritik. Good afternoon. कैसे हैं सब लोग? Everyone, good afternoon. Everyone ready? Everyone excited for today's session? Give me a thumbs up in the chat box. Give me a thumbs up, guys, in the chat box so that हम start करेंगे आज के session. Good afternoon, Suman. Hello. Hello, guys. Good afternoon. Hello, Sahul. Good afternoon. Okay, guys. So चलो guys. First, आज के क्लास मतलब ये वाले कोर्स जीत की जंग में ओके दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ओके जिसमें हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है दिस इज गोइंग टू बी अ रिवीजन कोर्स जिसमें हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स 11th एंड 12th का we'll do a very quick revision of all the topics of 11th and 12th. So guys, we are going to start with which one, the main concept. मतलब ये वाले टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन होगा. आपको याद है गाइस डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस वाला टॉपिक इट वाज इन क्लास 11th. Yes or no, everyone here? You might remember it. Class 11th में the first topics in mathematics, first topics were set, relations and function. And functions में we had this concept, right? Domain and range of the function. Okay, so I know throughout this 2 years many students are still having that confusion. Sir, domain क्या होता है? Sir, range of the function क्या होता है? So guys, today I'll give you a very detailed, we'll have a very detailed discussion on what will be the domain of the function, range of the function क्या होगा, questions भी करेंगे यार, questions भी करेंगे, previous year JEE main question भी करेंगे. Okay, domain में बहुत doubts create होता है. I know, I agree with that. So everyone, आज के session के बाद, after 1 hour, this will be for 1 hour, guys. Okay, ये फ्रॉम 3 to 4 ओके आफ्टर 4 o'clock आपको डोमेन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा दैट इज माय गारंटी बट ऑल यू हैव टू वॉच द एंटायर लेक्चर ओके यार ऐसे मत करो कि आपने यू हैव सीन हाफ ऑफ द लेक्चर एंड आफ्टर दैट यू हैव लेफ्ट द सेशन ओके डोंट डू दैट आप पूरा लेक्चर देखो सो दैट आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज and of how what type of questions are going to be framed on this concept. Okay, so chalo guys, so sorry, is everyone ready? सब लोग ready है यहाँ पे? सब लोग ready है? Everyone, I hope everyone is ready. So give me a thumbs up so that we can start the session. सब लोग chat box में in the comment section give me a thumbs up so that we can start with this particular session today. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. ओके, चलो गाइस, तो शुरू करेंगे पहला वाला टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोइंग टू बी अबाउट द फंक्शन. पुष्पम, 11th क्लास बच्चों को ये टॉपिक मतलब दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, क्योंकि 11th में ऑल दिस टॉपिक्स यू माइट हैव कवर्ड इट. ओके, सो अगेन और एक बार रिवाइज कर लो. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, चलो. So everyone, let us start the session now. So first things first, what you have to understand is, यार ये relation and function में difference क्या होगा? The first thing you have to understand it. Okay. So if you see the two diagrams here, everyone, आपको यहाँ पे दो diagram दिख रहा है ना, यहाँ पे दो Venn diagram. I hope everyone can see these two Venn diagrams, guys. Right. So ये दोनों Venn diagram में you need to understand which one is going to be a function. कौन सा रिलेशन होगा. ओके, सो आई टेल यू इन अ डिटेल वे विच वन इज अ फंक्शन, विच वन इज गोइंग टू बी अ रिलेशन. यार अगर ये दोनों सेट में लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी सेट ए एंड दिस विल बी सेट बी. ओके, ये भी सेट ए होगा, ये भी सेट बी होगा. अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इफ इट इज हैविंग ए यूनिक इमेज इन सेट बी, इसका मतलब क्या होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है, अगर इसका यूनिक इमेज होगा सेट बी में, देन दैट पर्टिकुलर जो भी वो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल यू सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, वन इज हैविंग ओनली वन इमेज. देखो यहाँ पे वन, इट इज गेटिंग रिलेटेड टू वन, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन का एक ही इमेज है यहाँ पे. टू इज ऑल्सो गेटिंग रिलेटेड टू वन, इसका मतलब क्या होगा, टू का भी एक ही इमेज है. थ्री इज गेटिंग रिलेटेड टू फाइव, इसका मतलब क्या होगा, थ्री का एक ही इमेज है. एंड फोर इज गेटिंग रिलेटेड टू टू, इसका मतलब क्या होगा, फोर का भी एक ही इमेज है. तो ये पहले वाले एग्जाम्पल में व्हाट इज हैपनिंग इज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इज हैविंग ए यूनिक इमेज. एवरी एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 एंड 4 एक यूनिक इमेज है सारे एलिमेंट्स के पास इन द सेट बी. Right, everyone? So that type of relations in which each and every element in the first set is having a unique image in the second set, that is going to be a function. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है. मतलब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, every function is a relation. Okay, every function is a relation, but every relation need not to be a function. Okay, every function relation होगा, but every relation need not to be a function, but vice versa condition true नहीं होगा. अब देखो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, यार वन के पास एक ही इमेज है, यू सी वन इज गेटिंग रिलेटेड टू वन, तो एक ही इमेज है. टू के पास कितने इमेजेस है यहाँ पे, कोई बता सकते हैं मुझे चैट सेक्शन में, इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, कैन एनीवन टेल मी टू के पास कितने इमेजेस है यहाँ पे. अब देख सकते हैं यार टू के पास दो इमेजेस है, टू इज गेटिंग रिलेटेड टू टू, टू इज ऑल्सो गेटिंग रिलेटेड टू थ्री. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो, टू के पास दो इमेजेस है. Okay, so it's not having a unique image. So what does that mean? Will it be a function? No, it is not going to be a function. तो ये function नहीं होगा. This is going to be a relation. We can say the second example is going to be a relation. The first example, यार ये होगा आपका function. तो इससे आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा. तो फंक्शन में क्या हो रहा है वहां पे, एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट having a unique image. Okay, having a unique image in the second set. But relation में क्या होगा, every element in the first set need not have a unique image in the second set. Okay, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक element in the first set को more than one images हो सकता है. Right, exactly. Very good, Pushpam. Very good, students. So I hope this concept is clear, the difference between the function and relation. Okay. Now let us start understanding this question now. यार आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो और मुझे ये बता दो कि ये दोनों सेट दे दिया, सेट ए सेट बी इज गिवन फॉर यू. आप लोग मुझे ये बता दो इसमें रिलेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा. Which one will be a function, which one is going to be a relation? Can anyone tell me? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि सेट ए में यू सी -3 इज गेटिंग रिलेटेड टू -1, 2 is getting related to 0, 5 is getting related to 1, 3 is getting related to -8, 6 is getting related to -1. तो इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, मतलब अगर आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक. दो वेन डायग्राम ले लो. पहले वाले वेन डायग्राम में यू टेक द फर्स्ट एलिमेंट्स दैट इज -3, और ये होगा 2, और ये होगा 5, और ये होगा 3, और ये होगा 6. ओके, सेकंड वाले वेन डायग्राम में यू टेक द सेकंड एलिमेंट्स -1, 0, 1 एंड -8. नाउ इफ यू ड्रॉ द एरो डायग्राम, यहाँ पे यू सी -3 -1 के साथ रिलेट हो रहा है यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या होगा, -3 का जो भी इमेज होगा वो -1 होगा सेकंड वाले सेट में. ओके, 2 का जो भी इमेज होगा वो होगा 0, 5 गेटिंग रिलेटेड टू 1, 3 गेटिंग रिलेटेड टू -8, 6 गेटिंग रिलेटेड टू -1. सो गाइस दिस इज द वेन डायग्राम आई एम गेटिंग. अभी आप लोग ही बता दो कमेंट सेक्शन में, एवरीवन टेल मी, विल दिस बी ए फंक्शन और विल दिस बी ए रिलेशन. ये रिलेशन होगा या फंक्शन होगा. कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी ए फंक्शन?
Can we say this is going to be a function? Yes, definitely ये function होगा ना यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं every element in the first set is having a unique image in the second set. So what does that mean? This is definitely going to be, we can say, this is definitely going to be a function. So I can say the first question, I mean the set A is definitely going to be a function. What about set B guys? Set B function होगा, relation होगा. Again, आप क्या करेंगे? एक Venn diagram draw करो, जिसमें पहले वाले set में write down all the first elements. So that is one function. Excellent, Rahul. Very good, very good. So one, ये three और ये 1 and 3 are going to be the elements in the first set. 4, 5 and -5, they are going to be in the second set. Okay, now you see what is the arrow diagram you're getting here. 1 getting related to 4, okay, 3 getting related to 5, 1 getting related to -5, 3 getting related to -5 and यार यहाँ पे 1 getting related to 5. अभी आप मुझे ये वाले वेन डायग्राम देके बता दो, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा या ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा? एनीवन हियर इन द कमेंट सेक्शन, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा नहीं तो ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा? कैन वी से दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग ए रिलेशन. रिलेशन क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि यार सिंपल सा क्राइटेरिया है. अगर आप पहले वाले देखेंगे, पहले वाले एलिमेंट्स, पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट्स है, if you see that they are not having a unique image. You see, 1 is having the images 4, 5 and -5. 3 is having the images 5 and -5. यूनिक इमेज तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक रिलेशन होगा. परफेक्ट, वेरी गुड पुष्पम, वेरी गुड साहुल, परफेक्ट गाइस, यू हैव गिवन द राइट आंसर. सो ऑप्शंस में देखो which option is going to be correct. ऑप्शन ए बी सी डी में which one is the right answer? तो ए फंक्शन होगा और बी होगा आपका रिलेशन. So A is a function, B is a relation. Option C is going to be the right answer. So how it's मतलब कितना simple सा question था, right? So it was a very simple question where to decide how to decide the difference between the function and the relation. Okay, so I hope guys this is clear for everyone. Now let us discuss the second question. अभी आप ये वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे. The relation f defined by f of x equal to x square and 3x. Okay, these are the conditions given for you, and g of x is defined in this way. Is asking you ये दोनों में कौन सा फंक्शन होगा एंड कौन सा रिलेशन होगा. ओके, सो गाइज कैसे करेंगे? अभी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगा ना सभी को यहाँ पे, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गाइज, हाउ टू डू सर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन लगता है हमें. सो गाइज सिंपल सा क्राइटेरिया है. अब क्या करेंगे? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स कैसे दिया यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स उसने दे दिया एक्स स्क्वायर. अगर आप x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में लेते हैं ना, तो उसको आपको एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा. आपको एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा. अगर आपने x का वैल्यू 3 या 10 के बीच में ले लिया, देन इन दैट केस आप एफ ऑफ एक्स को 3x ले लो वहां पे. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ ए वेन डायग्राम एवरीवन. एक वेन डायग्राम हमें यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ ए वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम में पहले वाले सेट में आप क्या करेंगे गाइस? वेरी सिंपल. ओके, यू टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर पहले वाले सेट में वैल्यूज ऑफ एक्स होगा, दूसरे वाले सेट में, सेकंड वाले सेट में ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज. ओके, नाउ एक्स के अंदर, ये पहले वाले सेट के अंदर we can take the numbers 0, 1 because you see x is between 0 to 3 and x is between 3 to 10. So आप यहाँ पे x के अंदर, ये वाले पहले वाले सेट के अंदर you can take 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on till 10. Now you guys tell me for x equal to 0 यार f of x का वैल्यू क्या होगा? You see अगर आपने कोई भी वैल्यू ऑफ x 0 to 3 के बीच में लेते हैं, f of x will take which expression? ये वाले एक्सप्रेशन विच इज एक्स स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? वेरी सिंपल. अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, यू पुट दैट इन दिस एक्सप्रेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो आपको मिलेगा f ऑफ 0 जो कि 0 स्क्वायर होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. तो आप देख सकते हैं 0 गेटिंग रिलेटेड टू 0. Similarly, when you put x equal to 1, 1 square 1 होगा, 1 is getting related to 1. When you put x equal to 2,
2 square, which is going to be 4. 2 is getting related to 4. When you put x equal to 3, 3 square होगा जो कि 9 होगा. So 3 is getting related to 9. Okay, so that is with this particular expression. Now again, if you want to take the second वाले expression, आपको अभी x का values 3 to 10 के बीच में लेना पड़ेगा. राइट, तो अभी x इक्वल टू 3 के लिए 3 3 are 9. सो अगेन 3 गेटिंग रिलेटेड टू 9, वो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है. If you take x equal to 4, 3 4s are 12. So 4 is going to be getting related to 12. So in this way, can we say, guys, every element of the first set will get related to a unique element in the second set? Can we say that? Can we say every element of the first set will get related to a unique element in the second set? हाँ, बोल सकते हैं ना. तो ये फंक्शन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन को या रिलेशन को. डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन. यहां से हमें क्या पता चलेगा कि एफ ऑफ एक फंक्शन है, रिलेशन नहीं है. आई मीन इट्स ए रिलेशन, a function also, where every element in the first set is getting related to the elements is having a unique image in the second set. Okay, similarly do it with the g of x, everyone. अगर आप g of x देखेंगे, g of x उसने कैसे डिफाइन किया है? x स्क्वायर अगर x 0 to 2 के बीच में होगा, 3x अगर x 2 to 10 के बीच में होगा. Okay, now guys tell me, g of x फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा या रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा? इसे हम आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे? हाउ डू यू नो दिस वन? वेरी सिंपल गाइस, आप क्या करेंगे? अगेन ड्रॉ द वेन डायग्राम. आप देखो यहाँ पे. सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट सेट कभी भी x के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंड सेट विल रिप्रेजेंट द this particular g of x values. Okay, so x के प्लेस में आप क्या करेंगे यहाँ पे? You can take 1, I mean 0, 1, 2, 3, so on till 10. Now for x equal to, if you take any value of x between 0 to 2, आपको कौन सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा? x स्क्वायर. ओके, इफ यू टेक x values between 2 to 10, आपको g of x के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा? 3x. So what are you going to get for x equal to 0? आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, 0 getting related to 0. For x equal to 1, आपको मिलेगा 1 square, so 1 is going to get related to 1. For x equal to 2, आपको मिलेगा 2 square जो कि 4 होगा, 2 getting related to 4. Now this is done. Now let me go with the second वाले एक्सप्रेशन, जिसमें अगर आप x equal to 2 लेते हैं, आपको 3 into 2 6 मिलेगा जो कि g of x का वैल्यू होगा. So what does that mean? 2 is also having another image which is going to be 6. Guys, यहाँ पे stop करो question. There is no need for you to find the rest of the elements. Guys, आप लोग मुझे ये बता दो, will this be representing a function or will this be representing a relation? Well, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 is not having a unique image. 2 का दो images है यहाँ पे, which is 4 and also 6. So whenever every element in the first set, if it is not in, when any one of the element in the first set अगर unique image नहीं होगा second वाले set में, तो क्या होगा वहां पे? That is not going to be a function. So we can say that the second one, which is g of x, ये होगा relation. So what is going to be the right answer in this particular case? Very good Rishabh, very good पुष्पम. तो correct answer क्या होगा? अगर आप option देखेंगे, f function होगा, g relation होगा. So option B is the right answer. Only f is going to be a function, g is not going to be a function. Perfect, perfect. Very good guys, very good. I mean, you guys are doing a wonderful job. Hello Shaurya, good afternoon. Hello Rishabh, good afternoon. So I hope this question is clear for you. Okay, तो guys ये basic होगा. Whenever we want to discuss about the concepts of domain and range, यार पहला तो आपको पता चलना चाहिए कि यार function क्या है, relation क्या है, उसके बीच में difference क्या होगा. Okay, now with this background हम क्या करेंगे? Let us start understanding the concept of number of functions. Okay, so number of functions कैसे निकालना है? Maybe you might have seen questions on this concept, right? Sir, number of functions कैसे निकालेंगे? मतलब दो सेट दे दिया,
he's asking us to find out the number of function. यार इसका एक सिंपल सा टेक्निक बता दूंगा आपको. Everyone follow this technique. You'll never get confused. Okay, formula छोड़ दो. Formula बाद में आपको you'll get to know how we got that formula. You see this example everyone. चलो मैंने यहाँ पे आपको दो सेट दे दिया. Set A के अंदर let us take 4 elements. Okay, 1, 2, 3 and 4. Set B के अंदर okay, let me take another set जो कि set B होगा जिसके अंदर let me take 3 elements for you A, B, C. Now I'm asking you ये दोनों के बीच में set A and set B के बीच में how many number of functions you are going to get. Okay, तो interesting question. So first thing यहाँ पे एक Venn diagram draw करेंगे guys यहाँ पे. So this is your Venn diagram. Let us say capital A and capital B. Capital A के अंदर you have 4 elements 1, 2, 3 and 4. Capital B के अंदर you have 3 elements A, B and C. तो अगर आपको यहाँ पे number of functions निकालना है ना guys, तो क्या करेंगे? Just apply this technique. आप देख सकते हैं clearly 1 is getting मतलब यहाँ पे 1 okay, you can basically relate that to either A or B or C. I'm not relating 1 to A, B and C guys. What I'm saying is आप 1 A के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप 1 B के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, 1 आप C के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. तो 1 के पास कितने चॉइसेस है रिलेट करने के लिए? एनीवन हियर? 1 के पास कितने चॉइसेस है यहाँ पे? इन हाउ मेनी वेज 1 कैन गेट रिलेटेड टू द एलिमेंट्स इन B? कैन आई से 3 वेज में रिलेट कर सकते हैं. तो 1 के पास 3 चॉइसेस हो गया. सिमिलरली 2 के पास कितने चॉइसेस है? इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 2 can get related to any element of B in 3 ways. मतलब 2 A के साथ भी रिलेट हो सकता है, 2 B के साथ भी रिलेट हो सकता है, 2 C के साथ भी रिलेट हो सकता है. तो 2 के पास भी कितने वेज हो गया यहाँ पे? यार 3 वेज हो गया. सिमिलरली 3 के पास भी 3 वेज होगा ना रिलेट करने के लिए, 4 के पास भी 3 वेज होगा. Now if I'm going to ask you total number of functions, यार कुछ मत करो, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो. ये 3 है ना यहाँ पे, सो 3 कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 4 बार रिपीट हो रहा है. सो द आंसर यू आर गोइंग टू गेट 3 raised to 4 एंड वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फंक्शंस को. तो समझ में आ गया सभी को यहाँ पे एवरीवन हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शंस इन दिस पर्टिकुलर वे? कितना सिंपल है देखो. तो सिमिलरली अगर आपको एक फॉर्मूला, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इफ यू वांटेड, यू कैन डू इट इन द सेम वे. अब देखो फर्स्ट वाले सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेकंड वाले सेट में लेट अस से देयर आर गोइंग टू बी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे आप क्या करेंगे? द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. सो फर्स्ट वाले एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू इन हाउ मेनी वेज टू एनी एलिमेंट इन द सेकंड सेट इन n नंबर ऑफ वेज. ये कितने वेज में होगा? ये भी n नंबर ऑफ वेज में होगा. सो इन दिस वे mth element will also have n number of ways. When you multiply n m number of times, this is what you're going to get, which is n raised to m, and that is representing the total number of functions. Okay, so I hope this question, the example and the formula is also clear for everyone. So this is how you have to calculate the total number of function. Now a very simple question for you. चलो देखेंगे कितने लोग ये वाले क्वेश्चन, ये वाले सवाल आंसर कर लेते हैं. मैं एक इक्वेशन बता दूंगा आपको. ओके, आप लोग मुझे बता दो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा. ओके, सो लेट अस से आई हैव गिवन यू एन इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax. आप लोग मुझे ये बता दो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और नहीं तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. मतलब इज दिस इक्वेशन गोइंग टू बी ए फंक्शन or is it not going to be a function? तो कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पे everyone? y² is equal to 4ax वाला equation, is it going to be representing a function or is it not going to be representing a function? तो इसका एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगा. यस, बहुत सिंपल सा मेथड है. whenever you want to decide no कोई भी इक्वेशन फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा, वो इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करो. Okay, so y² equal to 4x आपको पता है it's a parabola. ये parabola a standard equation of parabola है, a parabola which is going to be symmetric about x axis. तो ये हो गया इसका ग्राफ. Now
आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके, यार आप यहाँ पे क्या करो, यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। क्या करेंगे आप यहाँ पे, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो which is going to be a vertical line. Okay, now everyone listen to this carefully. When you draw a vertical line, you see at how many points it is going to be intersecting the graph. You see the vertical line at how many points it is intersecting the graph of the curve of this equation y square is equal to 4ax. You can clearly see that it is intersecting at 2 points, right everyone? So remember that when you draw a vertical line, if it is intersecting at more than 1 point, okay, if it is intersecting the curve at more than 1 point, वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करेगा then that is definitely going to be a function. So understood everyone? तो यहाँ पे 2 पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन होगा यहाँ पे? नो, इट इज नॉट going to be a function. आप यहाँ पे लिख सकते हैं not going to be a function. So similarly, if I give you an equation y is equal to x and अगर मैं पूछूंगा आपको यार ये फंक्शन होगा नहीं होगा, अब क्या करेंगे? अगेन द सेम थिंग, आप एक ग्राफ ड्रॉ करो, y axis, x axis, y is equal to x, it's going to be a line, straight line passing through the origin. तो लाइन कुछ ऐसा होगा, तो ये होगा ग्राफ ऑफ y is equal to x. अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे? You draw a vertical line. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एट हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग एवरीवन, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग हियर, कितने पॉइंट्स के पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वर्टिकल लाइन, ये ग्राफ को y इज इक्वल टू x को, कैन आई से ओनली एट 1 point, only at a single point. So what does that mean? ये function represent करेगा definitely. This is definitely going to be representing a function क्योंकि यहाँ पे it is representing मतलब it is only intersecting at a single point, right? So as I told you that if the vertical line intersects the curve at a single point, not more than 1 point, वो जो भी equation है that is definitely going to be representing the function. So I hope this concept is clear for everyone. मतलब कैसे represent करना पड़ेगा आपको, how should you represent, मतलब graphical representation of function. कोई भी equation दे दो, कैसे आपको निकालना है वो function होगा नहीं होगा, this is going to be called as a vertical line test everyone. आप example भी देख सकते हैं यहाँ पे, ellipse का equation है, ellipse भी function नहीं होगा, ये equation भी function को represent नहीं करेगा क्योंकि देखो after drawing the graph you see when I draw a vertical line you can clearly see that it is intersecting at more than 1 point. So is that going to be a function? No, वो function नहीं होगा वहां पे. Okay, so I hope this is clear for everyone. So यार ये हो गया basics of function. Okay, till now whatever we have discussed, these are going to be the concepts related to the basics of function. Now हम start करेंगे the main topic, the main hero of the today's class, domain and range के बारे में. तो यार ये डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट होगा ना, ओके, आई एक्सप्लेन दैट इन 2 different ways फॉर यू. दोनों वे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द वेज एवरीवन. द फर्स्ट वे थ्रू द वेन डायग्राम, ओके, थ्रू द वेन डायग्राम डोमेन ऑफ द फंक्शन को, रेंज ऑफ द फंक्शन को कैसे समझना है, एवरीवन लुक एट दिस क्लियरली. सो फर्स्ट थिंग आप देखो यहाँ पे, सो व्हेनेवर यू डिफाइन ए फंक्शन, आप ऐसे डिफाइन करेंगे ना, f maps x tending to y. This is how you represent a function. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं clearly f maps x tending to y. This is how you represent a function. Guys, always remember ये जो भी set होगा ना, मतलब the first set, this will always represent the domain. The second set will always represent the codomain. Okay, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये first set जो भी होगा it is always going to be representing the domain of the function. ये second set जो भी होगा ना यहाँ पे, this is going to be representing the codomain of the function. Okay, so आप लोग देखो यहाँ पे x में you have the domain, you see the set x is containing 1 2 3 4 elements. So what is the domain of this function? It will be simply 1 2 3 and 4. अगर मैं codomain पूछूंगा आपको, codomain is simply nothing but the second set. तो codomain होगा यहाँ पे 1 2 3 4 and 5. whatever elements are there in the second set वो कोड डोमेन के अंदर होगा.
ओके। तो चलो सर एफ सर्कल जी जी सर्कल एफ कब होगा, वो तो नेक्स्ट वाले क्लास में होगा। ऋषभ, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। तो फर्स्ट क्लास में ये टॉपिक मतलब ये वाले क्लास में डोमेन एंड रेंज होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, एंड उसके बाद we will be discussing about the composite function. Okay, so I guess tomorrow hoga the concept of composite function, f circle g g circle f. Don't worry, we'll cover every topic as I told you already. सारे टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक को डिटेल वे में कवर करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ओके, देयर इज नो नीड फॉर यू टू वरी अबाउट एनी टॉपिक। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, जिसमें पहला सेट डोमेन रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाले सेट कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। Okay, now everyone try to understand another way of understanding the function, and यार ये बहुत important है, you know, to solve the questions this way of understanding the functions is very important. तो सबको यहाँ पे machine पता है, the basic, you know, working of a machine. कोई भी machine ले लो यार, I'm not specifically, you know, saying this machine or this machine, I'm just asking you the basic functioning of a machine. तो machine क्या करेगा यार वहां पे, machine, what does the machine do everyone? Very simple, machine will take some input. Okay, machine क्या करेगा, it will take some input. Okay, let us say some raw material. Okay, और machine के अंदर कुछ processing होगा. Okay, and then you are going to get a certain output. Okay, एक desired output आपको मिलेगा वहां पे. So that is what a machine does. Let me tell you, function also behaves like a machine. F of x like a machine. Function also behaves like a machine. So मतलब इसका मतलब क्या होगा कि let us say f of x आपका machine है जो कि x plus 2, f of x I'm giving it as x plus 2. f of x का जो भी function है, जो भी machine है, it works according to the expression x plus 2. तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने इनपुट x इक्वल टू 3 ले लिया, आपको आउटपुट क्या मिलेगा गाइस, व्हाट इज द आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट, f of 2 का वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगा, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, सॉरी f of 3 का वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगा, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू गोइंग टू बी, f of 3 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 plus 2, can we say that is going to be 5, right everyone? So we can say function also basically, you know, it's basically similar to a machine जिसमें according to a certain input आपको एक certain output मिल जाएगा. Okay, now everyone, here comes the concept of domain. Domain is simply nothing but all the input values where the function is always going to be defined. Again I'm telling you, domain of a function का मतलब क्या होगा कि, let me write it down for you. Domain is simply nothing but all the input values of x, all the input values of x, all the input values of x for which f of x is defined, for which the function f of x is defined. तो सर मतलब इसका मतलब क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय f of x being defined? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो गाइस, ये वाले एग्जांपल से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा. लेट अस गो विथ y is equal to 1 by x minus 2. let us say y is equal to f of x equal to, okay, 1 by x minus 2. यार आप लोग मुझे ये बता दो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, what will be the domain of this particular function going to be? Anyone here? What will be the domain of this particular function going to be? Can we say यहाँ पे domain is all the real numbers except 2? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया. डोमेन का मतलब x values, okay, all the values of x where the function is defined. So आप x के प्लेस में कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, 0, 1, 3, 5, -1, -2, √2, √3, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट विच वैल्यू, एक्सेप्ट 2, क्योंकि यहाँ पे at x equal to 2 the function is not going to be defined. You getting it? क्योंकि देखो यार अगर आप x equal to 2 लेते हैं ना, डिनोमिनेटर 0 बनेगा यार, 1/0 तो अनडिफाइंड है, अब फंक्शन वहां पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा है वहां पे, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 2 डोमेन से निकालना है. ओके, सो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 is going to be the domain of this particular function. So understood the concept of domain? इसमें किसी का कोई डाउट है?
Anyone is having any doubt in understanding the concept of domain? So two ways I have given you to understand the concept of domain. एक way होगा जिसमें first वाले set में जो भी elements है, that is going to be the domain of the function. Second way क्या होगा? Second way is simply nothing but the domain of the function is simply nothing but all the values of x where the function f of x is going to be defined. So this is going to be the concept of domain of the function. Okay, so I hope this is clear. मतलब बहुत easy है, एक बार समझ मतलब once you have understood this, it's very easy, guys. Okay, now let me do one thing. Let me just give you an idea of whenever let us say function में more than one term होगा ना, तो वहां पे कैसे करेंगे, what we have to do in that particular case. मतलब यार एक एग्जांपल ले लो, f of x equal to x square प्लस 1/x-2, हमें इसका डोमेन निकालना है. वी नीड टू फिगर आउट यार ये वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा. वी नीड टू फिगर दैट आउट. ओके, तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं. सो व्हेनेवर देयर आर गोइंग टू बी मोर देन वन टर्म्स, इन दैट केस डोमेन कैसे निकालेंगे. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया फॉर दैट. तो वहां पे क्या करो, ये जो भी इंडिविजुअल टर्म्स है ना, इसका आप डोमेन निकालो. लेट अस से ये एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया. You calculate the domain of that. After calculating the domain of individual terms, you take the intersection and जो भी result मिलेगा, that will be the domain of the entire function. So this is going to be applicable not only for f of x plus g of x type function. अगर आप f of x minus g of x, f of x into g of x, f of x divided by g of x, if you take any functions with any algebraical operation between them, positive ले लो, addition ले लो, subtraction ले लो, multiplication ले लो, division ले लो of two functions, in that case अगर आपको डोमेन निकालना है, आप क्या करेंगे, पहला डोमेन निकालो इंडिविजुअल फंक्शंस का. ओके, एंड देन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू डोमेन्स व्हिच यू गॉट. जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, that is going to be representing the domain of which one, the domain of the entire function. Okay, and guys अगर आपका कोई भी डाउट है, in the comment section, in the chat box, you can type that doubt. Okay, I'm looking at your, I mean I'm already going through your chat box. I'm looking at each and everyone's messages. So अगर कोई भी doubt है, let me know in the chat box. I'll try to address your doubt, guys. Okay, now so in this question, अब देखो यार एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा. सो फर्स्ट लेट मी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डोमेन निकालेंगे. तो एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस में हम वी कैन टेक एनी रियल नंबर, राइट. फॉर एनी रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड. तो एक्स स्क्वायर का डोमेन d1 होगा ऑल द रियल नंबर्स. When it goes to 1 by x minus 2, when it comes to 1 by x minus 2, we already have discussed it. यहाँ पे डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 के पास हमें पता है डिनोमिनेटर 0 होगा एंड वहां पे ये वाला टर्म अनडिफाइंड होगा. सो दिस इज d1 एंड दिस इज गोइंग टू बी d2. So now if you want to figure out the final domain of the function, मतलब final domain d क्या होगा, गाइस क्या करेंगे, आप d1 एंड d2 का इंटरसेक्शन ले लो. मतलब ये दोनों सेट है, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दूसरा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2 है. ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग. द रिजल्ट इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2 एंड दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तो समझ में आ गया गाइस एवरीवन, यहाँ पे डोमेन कैसे निकालना है, how to find out the domain of the function. Is anyone having any doubt in this particular case? Got it? So I hope these things are clear for everyone. Okay, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, whenever you have more than one terms, okay, with algebraic operation in between them, positive, negative ले लो, नहीं तो multiplication, division ले लो, तो वहाँ पे domain of individual terms निकालो and then take the intersection between them. That will give you the final result, the final domain of the function. So I hope this concept is clear for you. Okay, yeah, intersection मतलब common, intersection मतलब दोनों के बीच में जो भी वो कॉमन पॉइंट्स होगा ना गाइस, कॉमन रीजन बोल सकते हैं, कॉमन पॉइंट्स बोल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट अस से सेट ए में 1, 2, 3 है. इन सेट बी यू हैव 3, 4. अगर मैं पूछूंगा आपको यार ए एंड बी का इंटरसेक्शन ले लो एंड बता दो इसका रिजल्ट क्या होगा,
तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ये दोनों में जो भी वो कॉमन एलिमेंट होगा ना, यू हैव टू टेक दैट एलिमेंट. सो 1 2 3 एंड 3 4, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, द एलिमेंट 3. सो दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Okay, now let us do one thing everyone. Let us start discussing about the concept. I mean, ये वाले question, what will be the domain of under root of a square minus x square. तो guys यहाँ पे how do we do this one? I'll give you a very simple way of doing this question. यार पहला आप लोग ये समझ लो कि under root of a square minus x square में okay, inside the square root आप जो भी term लिखो, it should always be non-negative. Yes or no everyone? स्क्वायर रूट के अंदर आप जो भी टर्म लिखेंगे, इट शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव टर्म, क्योंकि नेगेटिव टर्म लिखेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया वी कैन राइट डाउन. तो यहां से यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको मिलेगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ओके, यहाँ पे इंटू माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वी कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा यार, I mean in the inequations, in inequalities you might have gone through this concept that whenever you multiply by a negative number on both the sides, वो inequality क्या होगा, definitely it's going to change. तो greater than or equal to था, ये होगा less than or equal to 0. This is what you're going to get. So x plus a into x minus a less than or equal to 0. अब लोग मुझे ये पता है तो which values of x will satisfy this inequation? Can we say any value of x belonging to minus a to a will satisfy this equation? Yes or no everyone? अगर x का value minus a to a के बीच में होगा, then only x plus a into x minus a will be less than or equal to 0. So what does that mean? This is going to be the domain of the function, and if you see the options everyone, option B is going to be the right answer. So understood this question? इसमें किसी का कोई डाउट है यहाँ पे everyone? I hope this question is clear for you. Okay, so how do we figure out the domain? So whenever you have the square roots, no guys, the square root के अंदर जो भी term है, it should always be non-negative. So according to that, आप ये वाले condition ले सकते हैं, and from that if you solve it, you are going to get the values of x which will satisfy this particular inequation. Okay, लास्ट स्टेप में ऋषभ आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0 है. मतलब आप ऐसे समझ लो, लेट अस से यू हैव x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. आपको फिगर आउट करना है x के वैल्यूज क्या होगा जो ये वाले इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट आप एक नंबर लाइन के ऊपर, ओके, यू टेक द वैल्यू -2 and 2. Okay, so these are going to be number line के ऊपर I'm taking the values of x guys. Okay, आप लोग try to understand in this way that if you take any value of x greater than 2, for example आप 3 ले सकते हैं. So for x equal to 3, देखो यार 3 plus 2 into 3 minus 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप लोग बता दो. 3 plus 2 into 3 minus 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर आप कोई भी वैल्यू ऑफ x greater than or equal to 2 लेते हैं, the value which you're going to get is going to be a positive value. Now between -2 to 2, अगर आप कोई भी value of x between -2 to 2 के बीच में चूज करेंगे, let us say you're going with 0, तो क्या होगा, x equal to 0 के पास 2 into -2 मिलेगा which is going to be negative. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप x के वैल्यू -2 to 2 के बीच में लेते हैं, then the value of x plus 2 into x minus 2 will turn out to be negative, and any value less than -2 क्या होगा, for example -3 ले लो, x equal to -3 के लिए ये -1 होगा और ये होगा -5. so -1 into -5 यार वो तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे. okay, now everyone after getting this, तो यहां से देखो आप like from here
it's pretty much clear for you that any value of x less than -2, negative positive है, between -2 to 2 it is going to be negative, and any value of x greater than 2 it's going to be positive. And what are the region we are looking for? We want the answer. We are looking for the region where x plus 2 into x minus 2 is less than or equal to 0. तो यही रीजन होगा ना, -2 to 2 के बीच में it's going to be negative, ये वाले टर्म नेगेटिव होगा. We are basically looking for that region. So आंसर क्या होगा यहाँ पे? We can say x belonging to -2, 2, -2 to 2 is going to be the solution. Similarly, यहाँ पे भी same criteria. Okay, if you take the value of x between -a to a, then only this inequation is going to satisfy. तो ये होगा आपका domain. So I hope this question is clear for everyone. Now what we'll do, we'll go to another concept, and अभी हम discuss करेंगे range of the function के बारे में. तो domain तो हो गया, तो range को भी हम दो ways में समझेंगे, like how we have done for the domain. We'll discuss range in two ways. The first way, range is simply nothing but the images present in the second set. If you take all the images together in the second set, that is going to be representing the range of the function. मतलब अब देखो, अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं clearly guys. This is your set x and set y. Okay, you can see that one is an image of 1 and 2, 3 is an image of 4, 5 is an image of 3. Okay, so if you take this images together, 1, 3, 5, that will be representing the range of the function. तो अभी आपके पास डाउट होगा, तो सर कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एज आई टोल्ड यू, इफ यू टेक f maps x tending to y, गाइस ये जो भी सेकंड सेट होगा ना, ये सेकंड सेट रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को. ओके, एंड इन द सेकंड सेट whatever are going to be the images, जो भी images रहेगा second वाले set में, if you take all the images together, that will be representing the range of the function. So we can say that range is contained in the codomain. So we can say that range is going to be a subset of codomain, everyone. So understood the concept of range of the function? One way of understanding the range of the function is, if you take all the images together present in the second set, that is simply nothing but the range of the function. Now, another way of understanding the range of the function. So let me do one thing. Let me get back to this particular slide, जिसमें हम function को, we have understood the function like a machine. Now I told you, domain is simply nothing but all the input values of x where function is defined. So for all the input values of x where function is defined, आपको जो भी output values मिलेगा ना, all the output values together is simply representing the range of the function. तो देखो यार, यहाँ पे f of x equal to 3 के लिए आपको phi result मिला था. The phi is simply nothing but it will be present in the range of the function. So I can write it down here. So what is going to be the range of the function? Range is simply nothing but all the values of y, all the values of y or f of x for the input values of x, for the input values of x. If you take all the values of y together, that will be representing the range of the function. So is this point clear for you? समझ में आ गया सभी को रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? टू डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेंज. वन वे थ्रू द वेन डायग्राम, जहां पे इफ यू टेक ऑल द इमेजेस टुगेदर, that will be representing the range of the function. The second way, if you take all the output values together for the corresponding input values of x where f of x is defined, that is going to be representing the range of the function. Now I know range के ऊपर questions थोड़ा tricky लग सकता है. Yes or no, everyone? Range के ऊपर whatever questions are asked, you might be confused, it might be little bit tricky. तो आपके लिए मैं क्या करूँगा guys? I'll divide the entire range questions into 3 parts. Okay, the 3 parts are going to be this. Now I'll tell you according to the question which one you have to choose, which method you have to choose. Okay, now everyone remember, before you calculate the range of a function, it's always important for you to know the domain of the function. Okay, so let us say question दे दिया
y is equal to f of x. Okay, a question is given, is asking you to figure out यार इसका range क्या होगा बता दो. Okay, so before we calculate the range of the function, every time remember you need to calculate what is going to be the domain of the function. That is going to be your first step. Domain nikalo. Okay, and then you have to calculate what is going to be the range of the function. Okay, that is the first thing you have to understand, everyone. All values of y is codomain, not the values of y, not all the values of y. All the values of y put together will be representing the range of the function. Okay, वो जो भी second set होगा ना f map से tending to b में, वो b में जो भी second, that particular set b, which is the second set, that will be representing the codomain. Okay, chalo. So now everyone look at the three methods now. So sometimes let us say question में the domain will be containing the finite number of elements. So in that case अगर आपको range निकालना है, okay, then what we need to do, very simple, find the value of y at that particular values of x. If you find all the values of y at that particular values of x, that all the values of y together will be representing the range of the function. एक छोटा सा example दे देता हूँ guys आपको. So let us go with this example. Let us say y is equal to f of x equal to x plus 1. A function is given for you in this way. Okay. Now इसमें the domain is given for you. Let me take the restricted domain guys for you. Okay. Let me take a restricted domain जो कि होगा 1 2 3. ये होगा आपका domain. Is asking you यार इसमें आप range निकालो. What is going to be the range of this function? तो क्या करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे डोमेन में you have 3 elements, finite number of elements are there. तो अगर आप इसमें आपको range निकालना है ना, all you have to do is just find the value of y at this values of x. मतलब at x equal to 1, at x is equal to 1, अब कैलकुलेट करो यार y का वैल्यू क्या होगा. 1 plus 1, y का वैल्यू 2 होगा. एट x is equal to 2, y का वैल्यू क्या होगा. 2 plus 1 3 होगा. एट x equal to 3, y का वैल्यू क्या होगा यार. 3 plus 1, y का वैल्यू होगा 4. So if you take these values together, 1 2 3 and 4, if you take these values together, okay, what we can say here, this is simply going to be representing all these values together are simply going to be representing the range of the function. So understood everyone? कोई भी doubt यहाँ पे किसी का, how to figure out the range of the function? I hope this is clear for you. So whenever you need to figure out the range of the function where domain में finite number of elements are given for you, just find the value of y at x is equal to those values which are present in the domain. Like here आप देख सकते हैं domain में सिर्फ 3 elements है, 1 2 3. So हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे y के value निकाला at x equal to 1, x equal to 2 and x equal to 3. Okay, we got to know y is 2, y is 3 and y is 4, and accordingly if these values together put together we got to know the range of the function. Okay sir, तो इसमें तो कोफैक्टर भी सेम ही होगा ना सर. कोफैक्टर नहीं होगा यहाँ पे. I mean you're talking about codomain. Yes ऋषभ, I hope you're talking about codomain. मतलब यहाँ पे नहीं guys, आप लोग ऐसे समझ लो कि let us say I'm defining in this way the same function. ये जो भी function है ना f maps, I'm defining the function in this way 1 2 3, okay, to all the real numbers. Let me define the function in this way. तो इसमें क्या होगा, अगर आप Venn diagram draw करेंगे, you see I'm drawing a Venn diagram in this way guys. Okay, तो पहले वाले सेट में 1 2 3 होगा, सेकेंड वाले सेट में all the real numbers होगा. It's going to contain 0 1 2 3 4 so on. It's going to contain all the real numbers. Now when it comes to mapping, you see at x equal to 1 y will be 2, so 1 is getting mapped to 2. At x equal to 2, y is 3, so 2 is getting mapped to 3. At x equal to 3, y is 4, so 3 is getting mapped to 4. तो यहाँ से ये वाले Venn diagram से आपको क्या पता चलेगा कि 2 3 4 will be the range, but when it comes to codomain, this entire second set which is the real number, that is going to be the codomain. समझ में आ गया कोडोमेन एंड रेंज के डिफरेंस.
difference between what is codomain and what is going to be range. It's very simple. Again, I'm telling you, range का मतलब क्या होगा? Images. Whatever are the images present in the second set, all the images put together, वो represent करेगा range को. And whatever will be the entire second set, that will be the codomain. Okay. So guys, that is going to be the first method for you, the method number one. तो ये होगा आपका method number one. Now let me go to the method number two. So method number two में क्या होगा guys? In method number two, well, in method number two, sometimes the domain can be all the real numbers or maybe real numbers except a few finite points. So in that case, how to figure out the range? I'll give you a very simple example for that. यार आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो. The domain and range of this function. We need to figure out the domain and range. तो पहला यार आप लोग ये वाले क्वेश्चन में मुझे पहला बता दो कि डोमेन क्या होगा. What will be the domain of the function y is equal to f of x equal to x by x minus 1. इसमें बहुत क्लियर है कि डोमेन में we can take all the real numbers except 1. क्योंकि आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं ना, एट x इक्वल टू 1. यार डिनोमिनेटर तो क्या होगा? डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0. फंक्शन वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा. सो दिस विल बी द डोमेन, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. नाउ व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द रेंज, सो ये वाले क्वेश्चंस में, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, वेयर द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स और ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट्स, यहाँ पे क्या करो, ये वाले जो भी इक्वेशन है, you write that as x in terms of y. ये तो y in terms of x हो गया. यही इक्वेशन को आप x in terms of y निकाल. Write it in terms of, write it in such a way that it would be x in terms of y. तो कैसे मिलेगा आपको? If you cross multiply guys, I'll get xy minus y equal to x मिलेगा. So from here I'll get xy minus x equal to y. Okay. So this is what you're going to get. अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने x कॉमन ले लिया, आपको y माइनस 1 x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू y मिलेगा. एंड फ्रॉम हियर यू गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू y बाई y माइनस 1. सो इन दिस वे आई हैव रिटन डाउन x इन टर्म्स ऑफ y. अभी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस? वेरी सिंपल. नाउ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which x is always going to be defined. Again I'm repeating it for you. अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे? Find values of y. Find the values of y for which x is always going to be defined. For which x is defined. तो इसका मतलब क्या हो गया यार यहाँ पे? So आप अगर आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखेंगे, okay, which are the values of y which we can take for which x is defined always? Well, we can take y as all the real numbers except 1, क्योंकि आप x at y is equal to 1, डिनोमिनेटर 0 होगा, x डिफाइंड नहीं होगा वहां पे. So these are going to be the values of y where x is always defined. So range का मतलब what I told you, range is simply nothing but finding out the values of y. तो ये हमें मिल गया values of y and this is going to be representing the range of the function. So ये आपका domain हो गया. This will be the range and if you see the options everyone, option C is going to be the right answer. So understood this question? समझ में आ गया सभी को ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे? So whenever you have the domain, so ये वाले टेक्निक, ये वाले मेथड आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा गाइस? Again I'm telling you, whenever the domain is going to be of this particular type, जिसमें डोमेन आपको मिल गया ऑल द रियल नंबर्स, नहीं तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट फ्यू फाइनाइट पॉइंट्स, तो वहां पे आप क्या करेंगे? यू फर्स्ट राइट द इक्वेशन एज x इन टर्म्स ऑफ y एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x is always going to be defined. So this are going to be the two methods. Now final method guys, ये final method complete करेंगे and then the range concept will also be done. Okay, ये final method में क्या होगा कि कभी कभी यार domain you might get a set like this, set A comma B. I'll give you an example. Guys, I'm giving you an example for each and every method so that it will be super clear for you. Okay, so that आपको पता भी चलेगा कि यार कैसे apply करना है. Okay, let us go with this question. Y is equal to
अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे फिगर आउट करना है ये वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मुझे तो पता है यार स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स है दे हैव टू बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स मिलेगा विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 into x minus 3 less than or equal to 0. You can also write it in this particular way. Now for this inequation, which are the values of x which will satisfy this inequation? I can write down x belonging to minus 3 comma 3. This will satisfy this inequation. So ये होगा domain. What is this going to be representing? This is going to be representing the domain. तो यहाँ पे अगर आप domain देखेंगे, you got the domain as a set, सेट ए कॉमा बी, मतलब आप यहाँ पे x के वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं बिटवीन -3 to 3। सो वेन एवर यू गेट ए डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा गाइस, टू फिगर आउट द रेंज all you have to do is find the minimum value and the maximum value of y for the values of x in this particular set. Are you able to understand this? आपको रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे y मिनिमम वैल्यू निकालो एंड y मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ये होगा आपका रेंज। मतलब जो भी वैल्यूज ऑफ y मिलेगा वो सिर्फ यही सेट पे रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड दिस पर्टिकुलर सेट। So how do you figure out the minimum and maximum value? Very simple. अगर आप यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन देखेंगे, ये वाले इक्वेशन देखेंगे guys, we do know that x equal to -3 or 3, what will be the value of y? Can I say y is 0? And definitely ये minimum value of y होगा। And at x is equal to 0, यार y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू आपको मिलेगा 3, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। So if I want to figure out, if I want to define finally the range of the function, if I want to, basically conclude the range of the function, I can say it is going to be in the set 0 to 3. मतलब आप कोई भी value of x ले लो between -3 to 3, range का value 0 to 3 के बीच में ही होगा। So this is how you need to figure out the value. This is how you have to find the range when the domain is going to be of this particular type. So understood all the three methods, everyone? The first method, the second method, and the third method. So according to these three methods, you can basically decide whenever a question is given for you, आप आराम से decide कर सकते हैं, okay, which category it falls into, and according to that, you apply the method and get the solution. Okay. So एक previous year question हो जाए अभी, because we are done with the concept of domain and range of the function. So shall we do a previous year question, everyone? एक previous year question where you can basically see the direct application of all these concepts. Okay, so चलो यार एक previous year question आपको दिखा दूंगा। Just give me 1 minute guys। तो यार ये वाले question देखो यहाँ पे everyone, the domain of the function f defined by f of x equal to x by 1 plus x square, where x is belonging to all the real numbers. What will be the range of this function? So how do we figure out the range in this particular case? How do we figure out the range in this particular case, everyone? First tell me which category this falls into. First, second or third? Which category this falls into? I have given you three categories for finding out the range of the function. तो ये वाले क्वेश्चन निकालने के लिए, इसमें रेंज निकालने के लिए कौन से कैटेगरी चूज करेंगे? वेल डेफिनेटली द सेकेंड वन। व्हाई द सेकेंड वन? क्योंकि आप देखो यहाँ पे द डोमेन व्हिच इज सिंपली नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ x, द डोमेन इज गोइंग टू बी ऑल द रियल वैल्यूज, right? So I told you when domain is all the real values or real values minus some finite points, well वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? So whatever the question is there, y is equal to x by 1 plus x square, first write this as x in terms of y. Okay, so first let me do it in this way. आपको मिलेगा x square y, if you cross multiply x square y plus y minus x equal to 0, x square y minus x plus y equal to 0. This is what you're going to get. So यार यहाँ पे writing x in terms of y, you can do that. I mean applying the which one, the quadratic formula,
माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वहां से आप लिख सकते हैं, नो इश्यूज. और एल्स for this question specifically, I'll tell you a shortcut method. I mean, not a shortcut method, we can say a simple trick which we can apply here. अगर आप देखेंगे guys, if you take y as a constant, can we say this is going to be a quadratic equation in terms of x, everyone? Can we say ये जो भी हमें इक्वेशन मिला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अगर आप y को कांस्टेंट लाइक इफ यू कंसीडर y एज ए कांस्टेंट, यार ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x के टर्म्स में. एंड फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स. तो इसका मतलब क्या होगा कि यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x टू बी रियल नंबर्स. When is that going to be possible? हमें I think in class 10th, yeah, in class 10th we have covered this concept that for a quadratic equation, okay, if the roots of the equation are going to be real numbers, distinct or equal, but if the roots of the equation, quadratic equation, are going to be real, that is only going to be possible when discriminant value is greater than or equal to 0. Yes or no, everyone? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, then only the roots of the quadratic equation are going to be real. So यहाँ पे discriminant which is b square minus of 4ac greater than or equal to 0. तो guys b square के प्लेस में b तो यहाँ पे -1 है, तो b square 1 हो जाएगा, -4 into a will be y, c is also going to be y. Okay, so this is going to be greater than or equal to 0. तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 minus 4y square to be greater than or equal to 0, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y square minus 1 to be less than or equal to 0. We can write it in this way also, जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y square -1/4 लेस देन और इक्वल टू 0. ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 1/2 इंटू y माइनस 1/2. Okay, y plus 1/2 into y minus 1/2 to be less than or equal to 0. Now you tell me which values of y will satisfy this inequation. So can we say y belonging to any value between -1/2 to 1/2 will satisfy this particular inequation? So if you see the options, everyone, option A is going to be representing the correct answer. So understood this question? Understood this particular question, everyone? किसी के पास कोई डाउट है ये वाले क्वेश्चन में? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन. तो देखो यार, जेई मेन 2019 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेन 2019, एंड इफ यू नो दिस मेथड, आई मीन व्हेनेवर ए रेंज क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर आपको पता है कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, then you could have easily done this question, guys. Okay, so in case domain is not R, then we cannot apply discriminant greater than or equal to 0. Agreed, Rishabh? Completely agreed. Matlab, that is what I'm telling you, in this question already that is given that domain is all the real numbers, and that is true. क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में x by 1 plus x square में you can take x to be any real value, right? अगर आप x any real value ले लो, function is always going to be defined, so x is going to be real numbers यहाँ पे. So when because x is going to belong to real numbers, यहाँ पे x can take any real value. This quadratic equation का जो भी roots होगा, for that the roots are always going to be real. So what does that mean? Discriminant is going to be greater than or equal to 0 for this quadratic equation, and through that we got to know the result. We got to know the values of y which will satisfy this particular condition. Okay, fine. So और कोई डाउट यहाँ पे किसी का? Anyone is having any more doubt? समझ में आ गया सभी को? So guys, practice करो. You have to do few more questions on domain and range. Concept तो यही होगा, basic concept तो यही होगा, guys. So I hope these concepts are clear for everyone regarding the range of the function. If you want me to do, I'll do another question for you. If you want me to do, guys, I'll do another question, or else I'll stop at this point. आप लोग बता दो. Shall I do another question, another previous year question, one more previous year question on this concept of domain and range? I think we'll do one more, right? I think everyone here is ready for that. Chalo.
और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज एवरीवन। आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे यार, सिंपल, जेईई मेन 2019 में पूछा था। अगेन आई टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो गाइज आप देखो, फर्स्ट थिंग यहाँ पे द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log of x cube minus x to the base 10. Okay, now everyone, what you have to understand is, first things first, यहाँ पे अगर आप देखेंगे guys, यहाँ पे दो टर्म्स हैं। So whenever two terms are involved, what I told you, यार दो टर्म्स का डोमेन निकालो पहला। So for 1/4 minus x square, ये वाले टर्म के लिए डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2। क्योंकि अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लिया या x इक्वल टू -2 ले लिया, डिनोमिनेटर तो 0 होगा, एंड फॉर डिनोमिनेटर 0 यार फंक्शन तो डिफाइन नहीं होगा ना वहां पे। सो दैट इज व्हाई डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -2 and 2। So that would be for the first term. Second term, which is log of x cube minus x to the base 10, okay, to the base 10। guys आपको ऑलरेडी पता होगा log के बारे में। ओके, मतलब फॉर लॉग के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक इफ आई जस्ट गो थ्रू द फंक्शन लॉग, यू डू नो दैट फॉर log x base e, x should always be taken greater than 0, yes or no? inside for the function log x base e, this x part, ये जो भी x का वैल्यूज है, it should always be greater than 0। so log x base e का जो भी डोमेन होगा ना, it's always going to be positive real numbers, right? so according to that, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स का जो भी आपको वैल्यूज लेना है, ओके, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू बी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 greater than 0। So now we need to solve this, guys. We need to solve this inequation and we need to figure out what will be the values of x यहाँ पे। So for that, what you can do is, let me take x equal to 0, -1 and 1। okay, now when you take any value of x greater than 1, यार x into x plus 1 into x minus 1 तो पॉजिटिव ही होगा। between 0 to 1, if you take any value of x between 0 to 1, ये जो भी टर्म होगा ना, ये नेगेटिव होगा। between -1 to 0, ये टर्म होगा पॉजिटिव, and less than -1, ये होगा नेगेटिव। okay, so we are interested in the positive region, so we need to take -1 to 0 and 1 to infinity। मतलब आपको ये दोनों, ये और ये दोनों आपको regions आपको consider करना पड़ेगा। okay, so from here we are going to get x belonging to -1 to 0 union 1 to infinity। ये हो गया आपका domain number 2। Now to find the final answer, what we need to do, we need to take the intersection of the two domains। so d1 intersection d2। तो यार आप लोग मुझे ये बता दो, ये दोनों का intersection point क्या होगा, intersection points क्या होगा यहाँ पे। so can I say the intersection will be between -1 to 0, okay, union 1 to 2 union 2 to infinity। this is going to be the intersection। so if you see the solution, everyone, option C is going to be the right answer। and if you have any doubt, sir ये intersection I'm not able to get it, यार simple है। आप क्या करेंगे, एक number line draw करो। on the number line you see first thing, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे let me take -1 0 1। okay, so according to the second domain, this is the region we got the region as -1 to 0। we got to know the region is going to be between -1 to 0, okay, and 1 to infinity। this is one region we got for the domain 2, and for the domain 1 we got all the real numbers। for the domain 1, the region which we got is all the real numbers except -2 and 2। so इसको आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट -2 and 2, you can indicate like this one, like I'm just taking a circle at -2 and 2, which is indicating that ये दोनों पॉइंट हम रियल नंबर्स से we are basically removing it। now ये दोनों में you see the common region, it's pretty much clear for you that this is going to be the common region, everyone। देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा,
in which region it is intersecting between -1 to 0, 1 to infinity. But the thing is आपको 2 को exclude करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -1 to 0 union 1 to 2 union 2 to infinity, which is indicating that between 1 to infinity we are basically removing this particular number 2. तो ये होगा आपका सॉल्यूशन. तो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एवरीवन? ये वाले क्वेश्चन कोई भी डाउट है यहाँ पे किसी का? So again, this question was asked in JEE Main 2019 based on the concept of domain, and this is how you have to solve it. So I hope this question is clear for everyone यहाँ पे. Okay. So guys, that's it from today's session. I hope you have understood all the concepts which we have discussed. तो हम यार आज ये वाले सेशन में we have discussed about the concept of domain and also the concept of range. Okay, we have done some good number of questions to understand the application part. तो यार हम मिलेंगे 9 o'clock. There is another session 9 p.m. को 9 to 10 o'clock. Okay, where I'll be discussing another concept of functions. जिसमें हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग टू. आई नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, they find it difficult, they find it confusing. So attend the 9 p.m. session so that any doubts related to those standard functions, sabhi doubts आपका clear हो जाएगा. Okay, so that's it from today's session everyone. So guys, if anyone is not a part of Telegram, do join the Telegram group guys, so that आपको सारे के सारे updates मिल जाएगा वहां पे. In fact, you can scan it directly here so that you can directly join the Telegram group. So any more doubts in today's session? किसी का कोई doubt है यहाँ पे? Anyone else is having any more doubt? So I hope no one is having no more doubt in today's class guys. So चलो यार मिलेंगे 9 p.m. को 9 to 10 o'clock. सब लोग, I want everyone to be there. Okay, so that we are going to discuss another important topic. बहुत important topic है functions का, जो हम 9 o'clock discuss करेंगे. Okay, and if anyone has not subscribed the channel, subscribe करो, like करो, share करो, so that all those videos will reach maximum number of students. यार बहुत valuable videos है and it's very very useful for your last minute preparation of JEE exam. So like you can just share it in your group, in your college group, in your school group, so that the other students can also join. They can also watch these sessions and they can also get benefited from here. Okay, chalo guys, that's it from today's class. Thank you so much everyone. Take care everyone. Bye guys. See you at 9 p.m. today. Okay, so there we will be discussing about the standard functions and their graphs. I hope everyone will join that session also. Okay, chalo guys, then bye everyone. Take care guys.